Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. We are studying small and medium enterprises. So, the major challenge is about the development of small and medium enterprises, and creating entrepreneurial ideas, and then implementing them. Okay. So, in this lecture, we will discuss what is small business management, and how it is different from the entrepreneurship, and what are the requirements for the ownership of such businesses. So these are chapter learning outcomes. After reading this chapter, we will be able to, number one, articulate the difference between small business manager and entrepreneur, and we will also discuss the steps in preparing for the small business ownership, and then to enumerate the advantages and disadvantages of self-employment, because you know that entrepreneurship or developing the SME is a mode of, to you may say, the self-employment. And number four, describe the three main forms of ownership: sole proprietorship, partnership, and corporation, and their unique features. This is the yes, this is the story of an entrepreneur who developed, the idea paints, and these were the this man, you might know, there was the student in a college, okay, and uh, and they were studying the entrepreneurship, okay, and name of this person is John Gosha, and he was the student at Boston College in USA, and he was studying entrepreneurship, okay. So he along with his other friends used to develop different ideas, and what were they doing? They used to the put ideas on the walls, okay, and so they used small sheets, and placed those ideas written on those sheets on the walls. So they developed an idea that why there should not be a whiteboard, which can be placed on the the wall, and that can be used as a whiteboard, and that writing can be erased easily. So they thought that there should be a type of paint. It means we must paint a wall, and which may work like a whiteboard, okay, and simply by painting on the wall, and we can create a whiteboard, and we can use it for the writing, and that writing should be erased with the lusters, okay. So they went to the different paint companies, and they shared their idea. And they said that we want a certain paint which have such and such capacities. Okay, so although they were the only the students of the entrepreneurship, they were not knowing about different the composition of the different paints and how to make it. Okay, but they had an idea that this should be there. Okay, so after the getting low, the unsupported responses from the different companies, they certainly they were succeeded in the pursuing, or in convincing a company which said, okay, we can do it. Okay, so then they developed a specialized paint, and they named it idea paint. If you can Google it now, and that is very workable, and they launched that idea paint, and now it has the great contribution. Okay, simply just painting on the wall, you can create a whiteboard and then write over it. Okay, so that idea paint is now everywhere. It can be used for the arts and design and architecture, and the different art and design features. Okay, paintings, and using in the writing materials. So this is the story of an entrepreneur who they brought up a new idea, and that idea should be utilized. Okay, तो बात ये है कि जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, it has a new idea. Okay,
and now that idea is to be called as an entrepreneurship. So entrepreneurship is just is a way, you know, which in which you can just identify the opportunities, huh? And you can identify the needs which are marketable, and there you can you by doing so and by identifying opportunities and by creating the ideas and by sharing those ideas, you are also prone to assuming certain sort of the risk. Okay, so then assuming that risk, you are just going to develop an organization, a venture which has an ability to satisfy a particular customer needs. Okay, so what is the entrepreneurship? It is the process of identifying opportunities for which marketable needs exist and assuming the risk of creating an organization to satisfy them. एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप जो है कोई न्यू आइडियाज क्रिएट करते हैं और वो आइडियाज हैं जो कि यूनिक भी हों और साथ साथ क्या हो, यूजेबल भी हों. दो आइडियाज मस्ट हैव अ यूटिलिटी, must have a benefit which to be offered to the customers. Okay, and that must have a market value. It means which can be exchanged with the price, which exchange with the value. Okay, so definitely whenever you are introducing a new idea, there are a lot of risk of failure because there is uncertainty, because there is no any other business, no any historical records, there's no any track record. So by doing so are they exposed and are prone to a certain risk. Okay, so risk of the failure, risk of the uncertainty, risk of competitors, and so on. Okay, so in other words, the interchangeable word which is a term which is also used as small business management. The small business management and entrepreneurship, people think it is a similar thing, but it has a very minute difference. Okay, although these are the interchangeable, because every small business management must be the entrepreneurship, but every entrepreneurship should not the result in a small business management. So what is the small business management? It is the ongoing process of owning and operating an established business. Huh? Entrepreneurship is actually sometimes creating a new venture, and small business management sometimes become the managing the business which already exists. So the existence of that business might be due to the entrepreneurial process. Okay, so the person who does entrepreneurship is called an entrepreneur. Okay, an entrepreneur is a person who takes advantage of a business opportunity by assuming the financial, material, psychological risk of starting and running a company. Entrepreneur is a person. Entrepreneurship is a process. Okay, entrepreneurial venture is a business which is as a result of the entrepreneurial process. So now let us discuss what is the difference between the entrepreneurship and a small business manager. Entrepreneurship involves the startup process. Huh? Small business management focuses on the running a business over a long period of time and may or may not involve the startup process. Okay, may involve or sometimes may not involve. So just the the startup process is called an entrepreneurship. When that business starts, okay, so then you are managing a small business. So it then comes into the domain of a small business management. In managing a small business, most of the entrepreneuring was done a long time ago. Whenever you see that you are managing a small business, it means that in a past time you have come across with idea generation and idea, the promotion and idea implementation and the entrepreneurial process in which you do a lot of things, a lot of innovations. Okay, the manager of small business needs perseverance, patience, and critical thinking skills. As entrepreneur, we discussed that entrepreneur does what? He or she brings the innovative ideas, and then those ideas are presented, and those by presenting ideas towards the addressing certain needs, those people take risks. Those risks involve the financial risk, material risk, and the psychological risk. Right? So what are the financial risks? It means they have to invest certain financial amount, and that investment is at risk of the failure. If you fail in your new venture, in your new adventure, so it means you may forego that opportunities, and you can lose that amount of money.
So that is a financial risk. Material risk, the risk which is pertaining to any assets, machinery, equipment, or any material things which you engage in a particular business or a new business, the risky business. And the psychological risk is that whenever you are putting up new things, so it means your psychological well-being is high, and your patience is high. But when you fail, what happens to you? It is the breakup of the mind. It is the psychological, the breakup, and anxiety, depression, and so on. The emotional, instability which you face in the wake of the failures. Because certain people, many people can present new ideas, very unique ideas, but they don't have an ability to cope with the failures, because the failure is a part of this entrepreneurial process. The people, the entrepreneurs who are high on the resilience is the ability to bounce back in the wake of the success as well as the failure. It means when you get success, sometimes people who are experiencing the success uh, in their the careers, so they become very lazy and they become very overconfident, and they cannot manage those successes well. huh? So because they fail to improve continuously, and they fail to uh, you know, um, I fail to present new ideas, and they think that they are doing great. And one day comes when other people with new improved and updated ideas and methodologies may surpass them, and they are failed. Okay, some people experience failures. Those failures may be temporary. Those failures may be for a very short span of time. Those failures may be very much damaging. But people who are high on the resilience, they can cope up with those failures, and they can, are they are able to uh, do it and start it from different angle. They can diversify their business. They can manage uh, the negative impacts of those failures. But those people who are low on the resilience, they are damaged. They are prone to different psychological risks. So that may lead to very sometimes dangerous and sometimes very lethal consequences, because they fail. Sometimes they are burned out. They are they fall into the deepest depressions and anxiety, and they sometimes they bring suicidal thoughts and so on. Okay, so what was there? Just like the entrepreneur, the small business owner also needs certain capacities to be a successful manager, because they need the perseverance, they need the patience. Why they need patience? Because a lot of pressures they have to face. So they can face those with the patience and perseverance. And they also need the critical thinking skills. Okay, they may not involve so much creativity and innovation, but yes, they need the critical thinking skills, which may cover certain amount of creative skills as well, uh, creative self-efficacy as well, because they need it, and because they can come across very unique situations, not not the routine matters, but there might be situations which are unique to your own business. So you have to be very much cautious to apply different approaches, new approaches, which meet your own requirement, because you might be facing very specific conditions. Okay, so, people who love status quo, people who love routines may not be very much effective to manage in certain situations, which require critical thinking, which require creative thinking, which require innovative insights. So it means the people who are supposed to manage entrepreneurial ventures, who are supposed to manage the small businesses, enterprises, they must be very much sharp-minded and very
the critical thinkers. Huh? So what do managers need? Huh? In order to note whether they are ready for managing a business or not, there are certain, the question which you must ask from yourself. Becoming an entrepreneur is not an easy for everyone. In business, there are no any guarantees for the success, because you may face the failures. There is simply no way to eliminate all risks. It takes a special person with a strong commitment and specific skills to be highly successful as an entrepreneur. So, if you think that if you are whether you are ready for starting a new business or not, you must use this, the assessment question to better understand the level of your preparation. So this is the guide which is used by certain people in the trainings. This is taken from the training materials, which can use whether the people have an entrepreneurial ability or not. Huh? So what are the questions? There are certain general questions. Say for example, do you think you are ready to start a business? Okay, because certain people uh, don't want to go for their own business. Huh? There is a continuous study which is going to be undertaken every year. That is the GUESS. Huh? I would share the results of that the study. This study is conducted globally, and they survey the students of business administration and entrepreneurship. Okay, and they want to see whether what are their the employment intentions. Huh? So that study, which was published in 2018, I think, they found that 74% business graduates or the entrepreneurial graduates from the Pakistan, they opted to join workmanship after the completion of their degree. Okay, so it means they were not ready to have their own business. You have to open up their own business, because there might be the certain conditions. Why the students, why the graduates don't think for going their own business rather than they choose to be employed? Why they don't want to be an employer? Huh? Why they don't want to be as a self-employed person? What are those conditions? There might be certain environmental conditions and certain other conditions which require to the capacity. We will be discussing these things into this lecture, inshallah. Uh, okay. Would people who know you say you are an entrepreneur, or have you ever taken a small business course or seminar? So these are the questions which they create an environment in which you can understand that you have a capacity to undertake a business or not. Okay. So second might be the questions which are related to your own personal characteristics, with regard to your leadership characteristics. Okay, with regard to your the capacity to take your own decisions. Sometimes people take decisions by their own. Huh? Sometimes people rely on others. Sometimes people think that they have control over their own fate. It means the internal locus of control. And sometimes people think that everything is based on the luck or the external sources. Huh? So it means that is the external locus of control. So the people who are high on the internal locus of control, they research suggests that they are very much successful in creating new ideas and new businesses and new entrepreneurial ventures. Okay, and they are the successful businessmen. Do others turn to you for help in making decisions? Okay, it means it shows that your expertise in taking decisions, huh? And having more capacities, having the broader overviews about the conditions, and then your capacity to deal with the competition. Sometimes people don't want to engage in a competition. They because of their
fear to failures. They don't want to indulge in competition. Next question might be, do you have a willpower and self-discipline? That is main thing, because self-discipline is where the controlling is the vanished. uh. So entrepreneurial ventures, or the entrepreneurs need a self-discipline. They have to impose strong deadlines on themselves. They are self-managed and self-leaders. Okay, so if sometimes people may work well when they are being controlled by others. Okay, you can say them, okay, gentlemen, you have to work till this and this. This is your deadline. Okay, if you don't work, you may lose this. If you work, you may gain this. Okay, that person will be they're putting more and more effort in order to just meet their deadlines. But when it comes to your own autonomy, and when there's no any outside control over you, people become lazy because of lack of self-discipline. This is sometimes a natural tendency, or the national tendency in some nations, and some people are more self-managed and self-control. Okay, so highly successful managers of the small businesses are the sole proprietorship owners. They are the people who are self-managed and self-disciplined. Okay, do you plan ahead? It is your ability to think in advance and in the planning. And do you like people? It means whether you like to interact with the people, whether you are from the personality point of view, you are introvert or the extrovert. Introvert are the people who enjoy the loneliness, who enjoy the solitude. They don't want to interact with other people. So the ability to have an interaction with the other people and the new people may make you successful in dealings and selling your products, and the convincing the other people. So that is another factor. You get along well with others. That is a similar thing. Okay, whether you are an extrovert or not. Good people who know you say you are an outgoing. Okay, that is the way the people think about you and your successes and your patience. Okay, then there are conditions which is surround a person, which are specific to you. We call it the personal condition. Are you aware that running your own business may require working more than 12 hours a day, 6 days a week, and maybe Sundays and holidays? Okay, so this is that you must know what are the conditions. Okay, sometimes people engage in a business and they don't know what they have to do. Okay, so do you have the physical stamina to handle a self-employed workload and the schedule? That is again something like that. What are your mental and physical capacities to handle a new situation? Okay, then it is about your emotional strength, how you deal with the pressure. Certain people work well with the stress and the strain. Certain people cannot, bear this very low amount of the stress. Okay, low amount of the pressure. They become more frustrated. They become more anxious. Okay, so because you know that in the wake of uncertainty, when a lot of uncertainties are involved, so you need a patience, you need forbearance, you need to be very much encouraging, and you need self motivation. You need emotional stability. You have to control your negative emotions, and you have to control even your positive emotions. Sometimes like the excitement, etc. When you have to, हमारे यहाँ कहते हैं सिंधी में कि ढो जो होता है ना, ढो या मेही चले या वाणियों चले, ठीक है, दीवान जो होता है, ठीक है. Because sometimes people, when they have a power, they have a success, so they are मतलब हम कहते हैं they boil up, ओवर पावर हो जाते हैं और बड़ा ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं. इससे भी आपकी जो है वो इमेज भी डाउन होता है और आप फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. तो ओवर कॉन्फिडेंस अगेन लीड यू टुवर्ड्स फेलियर्स. So do you have an emotional strength की बात हम कर दिए. Are you prepared if needed temporarily lower your standard of living until your business is firmly established? ये सबसे बड़ी बीमारी है कि we don't want to start from the low. We don't want to start from scratch.
talk to everybody कि yes यार यार why don't you take up a new business, कहते हैं यार मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, कितने जी लाख 2 लाख में मुझसे क्या बिजनेस होगा. Everybody think that कि जी I must start a business from a very established office, from very established the facility where there everything is available, and I come with a long chair, huh, and sitting and managing the people. We don't want to start from the scratch because we don't want to handle very few things. We don't want to, मतलब, compromise on our status. These so-called status perceptions are a great hindrance, psychological hindrance in our entrepreneurial process. Are you prepared to lose a portion of your savings? हाँ? That's another thing. कि जी जब हमारे पास सेविंग आए तो हम इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाते, हम अगेन स्टेटस ओरिएंटेड चीजों पे खर्च करते हैं. ठीक है. तो have you ever worked in the microfinancing business? Anybody who is working over there? Microfinancing banks और NGO सेक्टर में तो काम कर रहा है इस तरह का. I have an experience of working in rural support programs. So what do people do? Huh? They apply for a micro loan, and when they receive that micro loan, they fulfill their own requirements. They don't engage in a business activity. क्या हुआ जी, बाद में यार वो भैंस लेने के लिए लिया था, बस वो फिर बेटे की सुन्नत तोड़ कर दी. ठीक है. या वो घर में जो है वो ये चीज नहीं थी, फ्रिज नहीं था, ये नहीं था तो वो ले आया, टीवी नहीं था तो वो ले आया, बच्चे तंग कर रहे. ठीक है. वो जी 20-25 हजार जो आपको मेरे बिजनेस बनाने के लिए आपने नहीं किए, तो अब आप कहाँ से किसके अंदर साइन दे दूंगा फसल से ये वो. Why do people do like that? Just Sir, because. same thing is happening with our program. Sorry. Sir, recently we have distributed many assets to the poor people. You are working in NRSP, so I was also. Asif, tell me, please, your experience of working with the community. Recently, we distributed many assets to people for opening their own business, but they rather decide to sell them out and couldn't make any changes in their personal livings. Yes. देखिए पहले ये था ना जी हम लोगों ने ना, मैंने खुद NRSP में काम किया था, तो हम लोगों ने तो 93 या 4 में काम किया था जब ये शुरू में आया था. तो when at that time these people used to give the money. Now the NGOs have learned that, oh, don't give them the money, give them the kind. Give them the kind type support. It means कभी भैंसें दे रहे हैं, बकरियां दे रहे हैं, मुर्गियां दे रहे हैं, ये चीजें लेके दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं ना, मगर उनको लोग सेल आउट कर देते हैं. मैंने खुद, मुझे याद है कि हमने ना अपने गांव में फार्म बनवा के दिया लोगों को. एक बंदे ने लोन अप्लाई किया था, मुर्गी फार्म हमने बना के दिया. ठीक है. उसके लिए हमने 100 मुर्गियां, मैं जाके खुद, मतलब है कि क्योंकि मैं वो एक्टिविस्ट था, मैं कोई NRSP का बंदा नहीं था, मगर एक्टिविस्ट था. ठीक है. और मैं वहाँ का आपकी अभी भी जो मैनेजमेंट है NRSP की, दे नो मी पर्सनली. वो टॉप मैनेजमेंट से. लास्ट टाइम जब मैं एमफिल करने गया था तो मैं वहाँ मुलाकात करने गया था, तो आपके CEO से मुलाकात हुई. तो मैंने कहा बदीन से हूँ, तो उसने कहा यार बदीन हम आए थे एक बंदे गाँव में और ये हुआ था. मैंने कहा सर दैट वाज मी. उसने कहा यार हम तो आपके हर ट्रेनिंग में एग्जाम्पल दे रहे हैं, आज आप मेरे सामने बैठे हैं. तो बात ये थी कि वहाँ पे जब हमने उनको लेके दिया तो क्या हुआ कि जी वो 100 मुर्गियां उसको दे दी थी, और मैंने ना उस वक्त अपनी, मतलब एक जेब खर्ची से, क्योंकि मैं उस वक्त स्टूडेंट था, तो 10 या 20 लेके आया था. वो मेरा 20 का फॉर्म ऐसा था कि हम उसमें काफी हमने कमाया, और वो 100 जो ना लेके बैठा हुआ था. जब भी कोई मेहमान आता, ओ साईं तू आ गया है, चलो मुर्गी पकड़, ज़बह कर, मेहमान को खिला. सारी मुर्गियां वो खा गए, खुद मेहमानों को खिला दी, दोस्तों यारों को दे दी, और आखिर में जो है वो उनके पास कुछ भी नहीं बचा. तो दिस इज, मतलब कि वही मतलब अजीब किस्म की स्टेटस परसेप्शंस हैं और अजीब किस्म की चीजें हमारे अंदर हैं, जिसकी वजह से हम ना बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है. ठीक है. तो मैं वही बता रहा हूँ कि रूरल सपोर्ट के इदारे और माइक्रो फाइनेंस के बैंक, ये सारे इस वक्त अगर आप देखेंगे इतना नेटवर्क है, हर बंदा, आप सर्वे कर ले, हर बंदा किसी न किसी इदारे का कर्ज ही मिलेगा आपको. जितने भी जो है वो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं. ठीक है. किसी न किसी सूरत में उनकी फैमिली का कोई एक बंदा ऐसा होगा जिसने पिछले साल या 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं से कर्जा लिया हो. ठीक है. आइदर एंड डिफॉल्टर हुआ हो या ना हुआ हो, मगर जिस मकसद के लिए उन्होंने कर्जा लिया होता वहाँ यूज नहीं होता. दैट इज गारंटी 90% कम अज कम.
तो बात ये है कि हम लोग, और ये तो चले मतलब लोन की बात है, मगर हम लोग जो है मतलब ओनर्स हैं या जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे पास जो सेविंग्स आती है तो वो हम क्या करते हैं, क्या हम उन सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं? अगर आप ये थोड़ी सी मतलब गूगलिंग करें, हमने एक रिसर्च पब्लिश की थी कि सैलरी पर्सन की जो है किस हद तक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके पास है, क्योंकि सैलरी पर्सन आपको पता है बहुत थोड़ा अमाउंट सेव करता है, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उसकी भी कंडीशन है, या तो इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास उनकी नॉलेज नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास मालूमात नहीं है, फिर दूसरी बात यह है कि वो थोड़ा सा ना वो नहीं है, उनके पास विल नहीं है, वो कहते हैं जी ओके सेविंग हो गई है तो हम चलो वही उड़ा देते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट की तरफ या उसमें से छोटे छोटे बिजनेस की तरफ नहीं जाते हैं। तो बहरहाल ये है कि आप अगर if you want to sacrifice your savings, and then implement them, or employ those savings into a business, so it means you may succeed in your business venture. Yeah? पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल कंडीशंस के बाद, पर्सनल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनल कंडीशंस के बाद एक और चीज जो है बनता है इंपॉर्टेंट, दैट इज स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। व्हाट आर दोस स्किल्स एंड एक्सपर्टीज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स? Do you know what business skills you need in order to have successful business? Do you possess those skills? Do you feel comfortable using computers? Or have you ever worked in managerial or supervisory capacity? Do you think can be comfortable hiring, disciplining, delegating skills? देखिए बाल का लोग जो है वो बिजनेस तो ओपन कर लेते हैं, मगर दे कैन नॉट मैनेज जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव सर्टेन स्किल्स ऑफ मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्स, managing the legalities of a business, okay, the legal aspects of the business, because they don't know, sometimes they work just because मतलब यू नो के वो उनकी जो ना एक ट्रेडिशनल वे होता है, ठीक है जी क्रेडिट पे काम कर रहे हैं आप और सारा जो है वो जुबान पे काम हो रहा है। when you are engaged in a business you must write down things, है? और आपको पता होना चाहिए कि जी जो चेकिंग अकाउंट है किस तरह बनते हैं, और कौन कौन सी चीजें क्या है, उसके लीगल जो रिपरकशन है क्या है, मतलब यू मस्ट नो इट। तो हम लोग ना इसी वही मैं उसी एनआरएसपी की बात करूंगा, मैं पहले नाम नहीं लेना चाहता था, मगर ये उसके अंदर भी हमने वो ट्रेनिंग कराते थे कि बुक कीपिंग की ट्रेनिंग और आपके अकाउंटिंग की ट्रेनिंग और आपकी मतलब है कि रिकॉर्ड कीपिंग की ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग कराई जाती हैं ताकि लोग जो हैं वो जो बिजनेस आप ओन करते हैं, बिजनेस बनाते हैं, तो उनमें कम से कम इतने स्किल्स हों ताकि वो अपने जो काम बेहतर तरीके से कर सकें और इस तरह की चीज़ें वो कर सकें। ये हमारा ये खत्म होगा सेशन, तो हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है? चलें जी, 1 मिनट में इसको एंड करता हूँ। Process, a model of the startup process, and it has two options. You know, the entrepreneurial process and the small business management process. First, we discuss the entrepreneurship process, the stage of business life, and that involves innovation, a triggering event, and implementation of the business. Okay, so you can see like this. These are two things: entrepreneurship process and small business management process. It involves this combinedly. This is called a startup process. Okay, so it involves 6 interconnected, the different activities. Okay, firstly the innovation, then there are certain events which are called the triggering events, then the implementations, and then that is the small business management process, which goes along from the growth, maturity, and the harvest. Okay, so what do you mean by the innovation process? Have you ever known this word as an innovation? What is that innovation? Can you explain? Anybody can explain the innovation? So something which is new, bringing new ideas. हाँ, bringing new ideas. ये अपना सदाम ही होंगे हम, ऐसे ही? Sir, Gulzar. गुलजार, okay. So innovation actually involves a process in which you not only bring the new ideas, but you promote those ideas
and garner support for those ideas. Innovation is again a process which encompasses at least three procedures as well. Recent study like Jensen 2000, and they said that innovation is a part of three interconnecting activities in which you create new idea. That is idea generation phase, and you garner the support for those ideas, that is idea promotion phase, and then you actually they work on those ideas, that is idea implementation phase. Okay, so in as a result of these three states, what you gain, that is a innovation. Because idea generation, it means there is a very much important thing, that the idea should be unique and usable, huh? Those ideas should have not been presented earlier, and that is a unique one, and that is a new one, and it must have a utility in terms of the benefits which it may offer, and the by benefit that idea offers are greater than the costs which are involved, and those benefits not only are provided to the customers and the public, but that also is a marketable. Because marketability is very much important, just because uh, in business activity you sell something in order to, or you give something in order to gain something, huh? So that is the exchange value. It means it means that product which you develop through this innovative process, that should be a marketable and saleable, and it should be sold on a value chain. Okay, so there are the certain triggering events. What are those triggering events? Triggering events are the the opportunities in the environment which let us do things. Huh? That is the specific event or occurrence which sparks the entrepreneurs, and that lead them from thinking to doing. Okay, that certain conditions are formulated, and those conditions. आवाज आ रही है? तो हम बात कर रहे थे कि जी इनोवेशन के बाद जो है वो देयर आर सम अदर थिंग्स व्हिच आर द ट्रिगरिंग इवेंट्स। मिसाल के तौर पर ट्रिगरिंग इवेंट्स कौन से होते हैं, और वो हैं जो कि कुछ ऐसे इवेंट्स जो कि आपको समझें कि सोचने पे मजबूर करते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह की एनवायरनमेंट के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपको समझें कि मतलब है कि काम करने पे या सोचने पे मजबूर करते हैं, ठीक है। और या ट्रिगरिंग इवेंट को आप ये कह सकते हैं कि एन स्पेसिफिक इवेंट और अकरेंस दैट स्पार्क्स द एंटरप्रेन्योर। हाँ, तो कभी-कभी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको आपके ज़हन में कोई आइडिया ले आते हैं, या आपके लिए कोई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मतलब क्रिएट कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर आप कहीं जाते हैं, तो अगर आपको कहीं नज़र आता है कोई नया बिज़नेस, तो उसके अंदर आप कोई नई इनोवेशन लाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाता है। या इस तरह की कंडीशंस जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है कोविड की वजह से हुआ, तो वहाँ कोविड की वजह से भी काफ़ी सारे नए-नए बिज़नेस जो है वो इमर्ज हुए, ठीक है। तो नए आइडियाज़ जनरेट हुए। इस तरह की कंडीशंस जब डेवलप हो जाती हैं, तो फिर बंदे को बिज़नेस आइडियाज़ भी आ जाते हैं। तो वो ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ट्रिगरिंग इवेंट्स जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में आ जाएँ, और तो फिर वो उनको क्या करता है कि वो उनको ऑर्गनाइज़ेशन की लाइफ के अंदर ले आता है, ठीक है। और सर्टेन ट्रिगरिंग इवेंट्स ऐसे भी हैं जिससे कि मिसाल के तौर पर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आते हैं। मैंने एक तो ट्रिगरिंग इवेंट्स वो हैं जो कि किसी एनवायरनमेंट के अंदर हो, जैसा मैंने कहा कि जैसे कोविड की कंडीशन हो गई है, ऐसा कभी-कभी कुछ ट्रिगरिंग इवेंट्स आपकी अपनी लाइफ के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पर बंदे ने जॉब से आपको किसी ने निकाल दिया, अब जाके अपना बिजनेस जाके खोल लेते हैं, ठीक है। और कभी-कभी तो लोग डाइवोर्स वगैरह इस तरह की कंडीशंस में जब होते हैं हो जाती है, तो फिर भी वो जाके नया बिज़नेस खोल लेते हैं। देखिए काफ़ी सारी ख़वातीन जब उनके हस्बैंड फ़ौत हो जाते हैं, तो वो आके नया एक बिज़नेस जो है वो ओपन कर लेती हैं। कहती हैं जी ठीक है जी, हमने हालात का मुकाबला करना है और हमें काम करना है। तो वो कौन-सी चीज़ें, वो ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं जो कि आपको स्पार्क करते हैं, आपकी एनर्जी जो सोई हुई एनर्जीज़ हैं, उनको जगा देते हैं, और आप जो है वो बाकायदा जनाब उठ के खड़े हो जाते हैं और काम करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ट्रिगरिंग इवेंट से मुराद ये है कि आपको मतलब एक प्रोवाइड अ बेसिस
हाँ, और वो एक किस्म का व्हील बन जाते हैं जो कि आपके इमोशंस को डेवलप करते हैं, आपको हरकत आपके अंदर पैदा करते हैं। खैर ये दोनों चीज़ों के बाद यानी उसके बाद जो है नेक्स्ट फेज जो है आता है, जब आप उसको कहते हैं एक्चुअली द एंटरप्रेन्योर इवेंट दैट कम्स आफ्टर एन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। So it means you actually implement that idea. Huh? You actually work on that idea. So जिस मैंने कहा था कि वो अगर सिर्फ आइडिया आपके तक है तक आप तक तो किसी काम का नहीं है ना। आइडिया जो है उसके ऊपर जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तभी वो आइडिया आपको बेनिफिट देता है और उसको हम एंटरप्रेन्योर इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो आपका रिस्क वगैरह जो है वो वहीं से शुरू होता है और क्या नाम है आपके जितने भी जो रियलिटीज हैं वो आपके इम्प्लीमेंटेशन के फेज के बाद से शुरू आती हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के मरहले, आप यकीनन इम्प्लीमेंटेशन मरहले पे आप 4-5 कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर समटाइम यू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, समटाइम यू इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। Sometime you open up new markets. You go somewhere where there is nobody which has reached over there. Okay, or you are generating new, from the supply side. You are generating new raw materials for doing certain things. ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे वही ये भी तो इनोवेशन होगी ना कि पहले हमारे पास जो है वो मिट्टी के बर्तन होते थे और बाद में वही बर्तन हम प्लास्टिक से बनने लगे, ठीक है। तो आप ये क्या है, ये एक किस्म की जो है वो इनोवेशन है कि आपने वही काम वही चीज़ें जो है आपने उनके लिए मटेरियल चेंज कर दिया, तो वो फिर क्या उनकी कैपेबिलिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी और उनका जो है वो सारी चीज़ें बदल गई, तब्दील हो गई। मिट्टी के बर्तन जो है वो टूट जाते थे या वो शायद वो इतने हाइजीनिक ना रहते होंगे, ठीक है। यानी उन तक आप रीच मतलब कर सकते हैं और या आप समटाइम यू कैन open up new supply resources, or sometimes you are introducing the industrial organization or new methodology of doing works. Okay, so here where the entrepreneurship, entrepreneurship is a process of creating new organization. Okay, when you define entrepreneurship in terms of organization rather than the person involved, it means that is the end of the entrepreneurial process, and where the entrepreneurial process ends, the process of small business management begins. Okay, so now when that starts the small business management process kya hai, the stage of business life that involves different stages like growth, maturity and the harvest. Okay, so what is the growth? It is the achievement of the critical mass in the business, a point at which an adequate living is provided for the owner and the family. With the you have lot of resources and your business is going on. That is the growth stage. The maturity stage is the stage in which the business is considered well established. So it has crossed all the hurdles. It has crossed all the problems, and it has managed all those problems and challenges. Okay, so sometime the variety different entrepreneurs, the lot of entrepreneurs, they cannot stay in the business until this stage, and they move from one opportunity to the other opportunity. Okay, so at this stage when you cross the stage of the growth and you become a mature, it means you are a fully grown up business, and you are highly committed business, and you have developed your the customer base, customer equity, and you have developed your own market. You might have developed your own reputation in the market. So now you are working as a full-time business owner, and so your business is flourishing. You are doing a lot of things. So in the harvest stage, this the state, the owner removes him or himself from the business. Okay, harvesting a business can be thought of as a picking the fruit after the years of labor. Now, when you say that the harvest stage is stage when the owner, the person who has established the business, now he is sidelined and he employs the managers, and now the work is
being done by the agents. Okay, so that is the fully established stages. Sometime you either you are working as a manager or you are working through the agents. Huh? So now the you can say that the businesses are being managed by the teams. Okay, तो एक अच्छे वक्त में मैंने इमरान खान का एक इंटरव्यू सुना था, तो उसने बड़ी अच्छी बात की थी। अभी तक मुझे जो है वो उसकी बातें समझ में आती है, और क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस जो उसके हैं क्या नाम है इंटरव्यूज, तो आज भी लोग उसको बड़ी तारीफ करते हैं। तो उन्होंने एक दिन कहा था कि मैं एक कैप्टन हूँ और मेरा काम है टीम बनाना, टीम को लीड करना, और जब वो टीम सक्सेसफुल हो जाती है तो बस वो काम जो है वो प्रोजेक्ट जो उस टीम के हवाले करना, और मैं एक और प्रोजेक्ट की तरफ लग जाता हूँ। Actually this is sometime a life of a owner, okay, or life of an entrepreneur, कि वो एक नया आइडिया शुरू करता है, एक प्रोजेक्ट शुरू करता है, और प्रोजेक्ट जब वो डेवलप हो जाता है और वो ग्रोथ करते हुए मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाता है, और फिर वो हार्वेस्ट की स्टेज आता है, तो फिर उस ओनर जो है वो उससे निकल जाता है और वो एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं आप। मतलब नाउ द सिस्टम इज कंट्रोलिंग दोस थिंग्स ना। तो आपने कभी नोट किया होगा लॉट ऑफ पीपल, there are a lot of people who have ownership of a lot of other businesses, variety of businesses, but they are not they managing those businesses very personally, but they are managing through agency theory, ठीक है। तो मतलब एजेंट्स के जरिए और मैनेजमेंट के जरिए वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है, ये स्टीफन कोवी की बुक है। तो उस बुक को आप जरूर पढ़िएगा, और उसने जो है उसने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी। उसने कहा कि जो लाइफ ऑफ द इफेक्टिव पर्सन इज अ लाइफ इन विच यू बिगिन with the end in the mind, हाँ? तो मतलब है कि whenever you want to start a new thing, you have in mind where you will lead to it, हाँ? कि आप इसको कहाँ तक ले जाएंगे, ये that is very much important thing, okay? तो हम बात कर रहे थे कि इसकी स्टेजेस की, ये बात समझ में आई? कोई क्वेश्चन है तो पूछें यहाँ अंदर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आवाज आ रही है जी सर, आवाज आ रही है। जी सर। मैंने वीडियो बंद की है क्योंकि वो इसमें इशू आ रहे हैं नेट में, तो तभी। ओके, ये देखें आप थोड़ा सा, हम और इन चीज़ों को देखते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं किसी किसी स्टेज पे चाहिए होते हैं। तो जो है मिसाल के तौर पर अ मॉडल ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस, और इसमें कौन कौन से जो है वो हमें स्किल्स और किसी किसी स्टेज पे जो है वो चाहिए होते हैं। तो आप ये ज़रा देख लें कौन से हैं। इस मिसाल के तौर पर हमने कहा इनोवेशन के स्टेज पे जो आपको पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के अंदर, ठीक है। और दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन रिसर्च बेस्ड स्टडीज, एंड ये एक पेपर एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पब्लिश हुआ था, उसकी जो है कॉन्फ्रेंसेस में। तो और वो इट हैज़ बीन अवार्डेड एज अ बेस्ट पेपर अवार्ड, ठीक है। तो ये मतलब है कि थोड़ा पुराना पेपर है, मगर ये है कि इट इज़ स्टिल रिलेवेंट। और एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट आप समझें कि इस तरीके से है जिस तरह इंजीनियर्स के लिए इंजीनियरिंग काउंसिल है, ठीक है। तो बिजनेस मैनेजर्स के लिए ये एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट का जो रोल है, वो अहमियत है, वो इस हद तक है, ठीक है। और ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि हर साल मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, और साथ साथ वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो जर्नल्स भी पब्लिश करते हैं। तो आप इसको ज़रूर गूगल कीजिएगा और इसके जर्नल्स जो हैं उनको भी विजिट कीजिएगा, और रिसेंट आर्टिकल जो है वो ज़रूर पढ़ा करें। जब एक बंदे के लिए आप समझते हैं कि कोई भी एक पढ़े लिखे आदमी के लिए मुख्तलिफ अखबारें जो हैं वो डेली पढ़ने चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल डॉन वगैरह है। तो इस तरीके से अगर आप बिजनेस मैनेजर हैं और बिजनेस के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के जो जर्नल्स हैं, और उसमें एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जर्नल और एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू, एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एनर्स जो कि हर साल मतलब साल में एक बार जो है पब्लिश करता है, और उसके और भी एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के और जर्नल्स भी हैं, प्रोसीडिंग्स भी हैं कॉन्फ्रेंस की। तो उनको आप ज़रूर विजिट क्या करें। उनकी मेंबरशिप भी अगर आप हासिल कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हो, तो ज़रूर आप करें, और इससे आपको जो है ज़्यादा बेहतर मिलेगा। आर्टिकल्स के मुख्तलिफ सोर्सेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैनेजमेंट के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है
कौन सी चीजें न्यू जो है वो पब्लिश हो रही हैं। ठीक है, ये एक किस्म का हमारा, आप समझें कि एक हाइड पार्क है या एक वाइट बोर्ड है, एक जो कि पूरी डेवलपमेंट्स को शो कर रहा है। हालांकि जनरल्स की लाइन में और भी जनरल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, मतलब मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा ये है, और 2019 में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर भी इनका था। तो बहरहाल हम आप चाहते हैं कि इस स्टेजेस पे हमारे कौन से जो है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमें चाहिए होते हैं। तो ये समझने की चीज़ है, इनोवेशन में जो पर्सनल करेक्टर्स चाहिए, नीड फॉर अचीवमेंट, ये पर्सनैलिटी के वो हैं। और नीड फॉर अचीवमेंट नहीं, एक वो थ्योरी थी मैक्सिलन की, ठीक है, और उसने लोगों को जो है वो डिफरेंट नीड्स में डिवाइड किया था। ये मैक्सिलन की थ्योरी ऑफ नीड्स किसी को याद है? हमने ओबी में शायद पढ़ी थी। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, और नीड फॉर क्या था, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, एक और भी नीड थी, नीड फॉर रिकॉग्निशन शायद। तो इसमें कहा कि अचीवमेंट ओरिएंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वो लोग जो कि नीड फॉर अचीवमेंट पे हाई होते हैं, दे want to control the situation, they want to control the conditions, huh? So they can emerge as an entrepreneur, they can emerge as a leader, ठीक है। और जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज द इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल आई डिस्कस अर्लियर एज एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। मैंने बताया था कि बंदे की पर्सनालिटी की दो चीजें होती हैं, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। Internal locus of control is a condition in which you think that you are in charge of yourself. You can control the things around you. Huh? You have more power over the conditions. You can change the situation. ठीक है, लोग कहते हैं जी यार किस्मत ऐसी है, किस्मत यू कैन, आप बदल सकते हैं किस्मत को। जो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि किस्मत को हम बदल सकते हैं। मतलब किस्मत से बदलने की बात ये है कि हम अपनी कंडीशन को, अपने हालात को खुद बेहतर कर सकते हैं। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे होते हैं, यार बस ऐसे था, ये हो गया, फलाना हो गया, बस मैं कर नहीं सकता हूँ भाई, ये मुझसे नहीं हो सकता, यार ये फलाना नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा, हम ये करेंगे तो हो जाएगा। यानी इट एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यू थिंक दैट conditions are under control of environment, situation, and factors and actors other than the you. So you only rely on the luck, you only rely on the chance. The people who are high on the internal locus of control, again I said that they are in charge of themselves, and they have a capacity to take new and unique decisions, and they can take the risk. Okay, so third point is the ambiguity tolerance. The tolerance to the ambiguity. It is also a personality characteristic which tells us that how much you deal, how much you feel comfortable with uneven conditions, non-routine conditions. How much you can go beyond the status quo, how much you can deal with the uncertain environment. Okay, sometimes people, just try those things which are already tried and tested. Or they can just follow the suit. They cannot generate their own path. Okay, so because they are not the adventurous people, they don't want to explore new things. The people who are tolerant to the ambiguities, they can handle uncertainties well, they can handle new things well. Okay, so another thing is the risk taking, your ability to take initiatives, your ability to lose something in order to get something. The people who are high on the risk taking, they also can take the new and unique decisions, and they are available, they are ready to forego certain resources. Okay, so they are ready to bear certain losses. They have a more capacity to lose something. Okay, so personal values, that is a good thing. Personal values क्या है कि हाउ मच यू आर मैनेज बाय योरसेल्फ। ये भी एक वैल्यू है कि सुबह जल्दी उठना, जल्दी सो जाना, ये भी एक वैल्यू है। ये है कि ये एक वैल्यू है कि जी आप अपनी जो बात करते हैं उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। ये भी एक पर्सनल वैल्यू है कि आप जो फैसला करते हैं और उसके ऊपर पाबंद रहते हैं। ये भी एक वैल्यू है कि आप जो है जो भी काम करते हैं इसमें अपने बेनिफिट के साथ साथ दूसरों का बेनिफिट का देखते हैं। ये एक वैल्यू सिस्टम है। तो जिस तरीके से आपका वैल्यू सिस्टम है, ये आपके कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमिन करेगा। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि जो है चोरी करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, तो इट मीन्स कि आप जो है धोखा भी देने के लिए रेडी हो जाएंगे, फ्रॉड करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप समझते हैं नहीं यार, चोरी करना और अपनी बात से मुकर जाना और वादा खिलाफी करना बुरी बात है, तो आप फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बिहेवियर को
फॉलो करेंगे, पाथ को फॉलो करेंगे, इससे क्या होगा, आप एक रेपुटेशन डेवलप करेंगे, आप एक जो है एक अच्छी जो है गुडविल डेवलप करेंगे मार्केट के अंदर, इट विल सपोर्ट यू है। सो इट इज बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल वैल्यूज। तो उसके बाद क्या है, एजुकेशन है यकीनन, क्योंकि एजुकेशन डेवलप योर इनसाइट, education train your mind, education gives you certain access to the resources and skills, education develop your cognitive and mental capacities and abilities, education provide you how to manage your own resources, how to find out the things which can support in your the following your passions, okay। एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, और आपका एक्सपोजर है, ये सारी चीजें बाद में आ जाती हैं कि आप जितना एक्सपीरियंस क्या है, द टाइम विच यू स्पेंड डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, ओके। सो व्हेन यू do a particular job for a longer period, it develops your learning curve, है ना, and your learning curve is developed, it decreases the amount of time and skills and effort you spend on doing a particular task, है ना। So more you experience, more the greater your learning curve, and the shorter your time spent on it, and you shorten the waste of the time, and you use limited resources and do something like that. So experienced people are highly productive people, experienced people are highly effective people, experienced people are highly efficient people। तो effectiveness क्या है कि your ability to find out right goals, and efficiency क्या है, your ability to they attain your goals with limited resources, limited costs, and the greater benefits। So these are the benefits of the experiences, experience से आप चीजें सीखते हैं। तो एक काम अगर आप 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, तो आपका उसके अंदर एक 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 नेक डेवलप हो जाता है, जिसको हम मलका कहते हैं उर्दू में, और हम जो है वो एक सिंधी में उसके लिए मुझे है कि जी दांत कहते हैं ना। तो ये एक चीज डेवलप हो जाती है, तो आप उसके लिए फिर क्या, आपके लिए वो काम करना आसान हो जाता है। एक बंदा एक मशीन को ऑपरेट कर रहा है 5 साल से, ही इज मोर एक्सपीरियंस देन द पर्सन हु हैज रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। So sometimes that in your mechanical fields and very technical fields, the technicians are more aware about the how the machines operate than the engineer who come up with a particular degree having a certain CGPA over there, huh? Why? Experience you learn from the trial and error है। तो एक और दो चीज़ और होती है, एक्सपर्टीज और क्या नाम है एक्सपोजर। एक्सपोजर ये है कि आपके जो है degree to which you observe new things and you have experience of working with variety of settings and environment, ठीक है। that is your exposure कि आप कितनी, मिसाल के तौर पर एक बंदा है उसको बड़ा एक्सपीरियंस है, और मतलब उसका एक्सपीरियंस सिर्फ एक सर्टेन टाइप ऑफ मशीन के ऊपर है, और सर्टेन टाइप ऑफ यूनिट के अंदर है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और कहीं और उसी लेवल की और मशीन्स के साथ और उनके ऑर्गेनाइजेशन काम करने के साथ उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम कहेंगे इसका एक्सपीरियंस हुआ है मगर इसका एक्सपोजर नहीं है, ठीक। ये सारी चीजें आपकी जो है वो इनोवेशन में डेवलप करते हैं। जितना आपके पास ये चीजें होंगी, आप न्यू जो है आइडियाज को डेवलप करोगे। फिर ट्रिगरिंग इवेंट्स में भी आपकी जो है वो कौन सी चीजें हैं, ट्रिगरिंग इवेंट्स तो आपके सामने आते हैं। मिसाल के तौर पर आपको जॉब से निकाल दिया, आप क्या करेंगे? अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप जाकर नया काम करेंगे, नहीं तो आप हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे, ठीक है। और जॉब जो है अगर जो है मतलब है कि सारी चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, तो उसके अंदर भी कुछ मतलब है कि हैं कि जी अगर आप रिस्क टेकर हैं, और जॉब डिससेटिस्फेक्शन जो है वो भी कहते हैं ना कि आमतौर पर लोग कहते हैं, इदारे कहते हैं कि जॉब डिससेटिस्फेक्शन जो बड़ी खराब चीज है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी को लूज कर जाती है, लोग एब्सेंट रहते हैं और लोग जो है वो अपनी कमिटमेंट शो नहीं करते। मगर जॉब डिससेटिस्फेक्शन, एक बंदा जब डिससेटिस्फाई होता है तो क्या करता है, वो फिर जॉब के अंदर ना, या अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाता है, जाके नया बिजनेस खोलता है, या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इनोवेशन लेके आता है। जिसको जॉब डिससेटिस्फेक्शन की अगर आपने याद हो आपको मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सेस टू जॉब डिससेटिस्फेक्शन, तो हमने 4 रिस्पॉन्स पढ़े थे ना, एग्जिट और लॉयल्टी और वाइस और निग्लेक्ट। तो उसमें 2 जो है एक्टिव थे, 2 पैसिव थे, 2 जो है वो
डिस्ट्रक्टिव थे, 2 कंस्ट्रक्टिव थे। तो इसके कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट्स भी होते हैं कि वो किसी ने कहा था कि मैंने अगर कोई न्यू काम कराना हो तो मैं सबसे लायक बंदे को नहीं देखता हूँ, मैं सबसे लेजी बंदे को ढूंढता हूँ, क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट वे जो ढूंढ लेता है काम करने का। तो ये है कि आप हमारे यहाँ हम एक टर्म यूज करते हैं, जॉब क्या नाम है, एक होती है, मैं आपसे वो जॉब डिमांड थ्योरी के अंदर एक चीज हम डिस्कस करते हैं, और चलिए मैं आपको बताऊंगा। जॉब डिमांड थ्योरी नोट रखना है, उसके अंदर एक मॉडरेटिंग फैक्टर हम यूज करते हैं। तो वो ऐसा है कि जिसके तहत ना आप नई चीज लेके आते हैं। मैं सर्च कर दूं क्या? चलिए आप खुद सर्च करिएगा, मैं आया आपको बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा कि वो कौन सा फैक्टर है, नाम एग्जैक्टली मैं भूल रहा हूँ, बुरे हो गए लगता है। चलिए, तो वो है कि आप जो है नहीं, जब तक मैं ये चेक करके नहीं बताऊंगा तब तक जो है मुझे सुकून है। एक मिनट होल्ड करें। कहाँ थे हम? नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। नेटवर्क, टीम, पेरेंट्स और रोल मॉडल में। ओके, सो कुछ और चीजें होती हैं जो कि आपके साथ जो है वो प्रॉब्लम मतलब वो करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जब इम्प्लीमेंटेशन से ग्रोथ के फैक्टर में जाते हैं तो कौन सी चीजें हैं जो आपके पास अंदाज हो सकती हैं, कौन से पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए। और वो है मतलब एबिलिटी टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड लीडरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स और मैनेजरियल एबिलिटीज एंड योर again the commitment and your vision. Vision means how much you think, how much you have insight to give the direction to your business. Okay, तो एंटरप्रेन्योर के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बता के हैं, लीडर और मैनेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स यू आल्सो नो। कमिटमेंट इज एन एबिलिटी, कमिटमेंट इज अ फोर्स दैट बाइंड्स अ पर्सन टुवर्ड्स अ टारगेट। ओके, जो कमिटमेंट ये है कि आप जो है कितना अपने टारगेट के साथ मतलब वो बाउंड रहते हैं और उसके साथ लॉयल रहते हैं और उसको छोड़ते नहीं है। ठीक है, मतलब एक आइडिया आपने एक बिजनेस लिया और अगर आपकी कमिटमेंट होगी फिर आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसके साथ हर थिक एंड थिन में मौजूद रहेंगे और उसको आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी कमिटमेंट है। तो यहाँ तक जो है ये तीन जो चीजें हैं ये मतलब इट इज क्या नाम है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। ठीक है, so now it happens an entrepreneurial event. It means when you cross these three the events or three stages, then you develop a business. Entrepreneurial event is just like when you create a business. Okay, here the entrepreneurship process ends and the process of the small business management starts. Okay, so then you move towards the growth of the business. So you know what sort of the organizational characteristics should be there, which can determine the growth of the business, or on which the growth of the business relies. That is the quality of the teamwork. Okay, how synergetically you work with each other, how you support each other, and how much effective team you have developed, how much functional teams you have developed, and what are the characteristics of team, what is the expertise and experience and educational patterns and the commitment patterns of your team members. Okay, strategy is the planning, which is the long-term planning, and how much you believe in the planning and how much you think in advance. Okay, the structure is the way your powers are distributed among each other, the resources are you know um, distributed among the different members of the organization. The culture is the ways, the norms of doing the things at the organization. Okay, it means what are your routines, what you like and what you dislike. Then actually the products that you offer, how your products are important, and how your products are different from your competitors. Okay, again there are there's environmental factors which have an influence, which have a negative impact on these things. We will be discussing in this slide, although these were the part of the previous slide, but we skipped that. So we are discussing here again. So again, from the growth to the maturity, what sort of factors you need to move from the growth to the maturity? Because sometimes when you grow, you don't attain maturity just because when you think certain things, like the managerial procedures. Okay, the planning, organizing, leading, and controlling. If you manage these things very well,
you manage your organization very well, you can move from the growth stage to the maturity stage, and you can enable your organization to sustain for a longer period through engaging in planning, organization leading, and controlling function. It means developing the managerial skills of your managers, developing a management structure in your organization. So at the maturity stage, what are those organizational characteristics which make you stay over there for a longer period? That is your abilities of your capacities of your different the function or the segments, that is like the marketing, finance, operations, HR. How your marketing department is working, how much how you advertise, what are the basis of your advertisement. Sometimes you focus on your product and product features. Okay, when your advertisement is just focusing to your product features, so it means any other advertisement or any other business which is providing the competitive nature of those product features, so it means it may surpass you. So sometimes you also add in your promotional activities, like the care which you take about your customers, huh? And what are you providing other than just the products. Okay, say for example, the vision, the promotional vision of the entire supermarket is, they say that we don't only provide the grocery to the people, we provide the touring experience to them, also the entertainment experience to our customers as well. So we value our customers. So it means when you add certain value added activities into your marketing strategy, so it will grab more customers for you. And then how you deal with the finance, how much you manage your working capital. Okay, how much you manage your account receivables, how much you manage your the equity and your debts and your credits. Okay, sometimes you work and you give the unaudited and unregulated credits to the customers without checking their credibility and without checking without assessing their ability to pay back. So if it may create a lot of bad debts for you, and it will again create a huge loss for you, and so then your financial system may. So how effectively you manage your finances, it will also determine the conditions for your maturity, huh? And then actually your operations, how are you utilizing your capacities? Either you are working at a full capacity level, or you are not fully utilizing your capacity. It means if you have an ability to produce 100 products per day or per hour, but you are not doing so, it means you are not utilizing your full capacity. Okay, so full capacity employment is very much necessary. So 100% full employment you cannot achieve, but you can go for the maximum. Then how much effectively you are managing your human resources, huh? How effective are your HR practices, how effective are your recruitment and selection procedures, how effective you manage the performance appraisals, how effectively you are training the people, what sort of opportunities you are giving to them, and how much the finances are the financial benefits and non-financial benefits you are giving to your people in order to make them stay in your organization, how you are managing the people, huh? So how you are managing their satisfaction in the organization. Okay, so how you are taking care of your people in the organization. So this is the human resource management which you have to do and you have to see in order to achieve the maturity of the organization. Okay, then for the harvest factor, if when an owner thinks that I'm no longer required for the organization, what should be the the personal and organizational characteristics? Like personal characteristics might be the better opportunity or boredom or financial opportunity or yeah, achieved goals. These might be the things which trigger the owner to leave and give this business to management. And there are certain organizational characteristics which also give us sometime at a from harvest you can think that you sometimes you
uh, give your business to other parties, or you just leave or exit from that business. So what are those conditions? Organizational conditions. Sometimes you fail. Sometimes you merge towards your organization. Sometimes you are out of your cash. Sometimes you don't provide different facilities to your people. Okay, so these are the things which they establish your ability to harvest when you leave your business. Okay, and give it to other people. So there are certain environmental conditions which will also be okay. Environmental conditions which have an the adverse are sometimes the positive impact over over the different activities at the different stages. Okay, so you can see these environmental conditions, and I will like yes, in growth pattern or the growth stage, what are those environmental conditions which will create an sometime opportunities and sometime threats for you, huh? So what are those factors? What are those environmental actors? The competitors. Competitors are those people who are working in a similar domain. Either they are working in a similar, offering their similar products, or the services, your substitute products, or the complementary products, and then the customers. Customers might be the end consumers, are your wholesalers and the retailers and other business customers. Okay, the suppliers are the people who provide you the raw material. Investors are people who are interested in your financial health of your organization, and they are the people who can lend you the money. The bankers who can give you the loans. The lawyers who are responsible to see whether you are working in accordance to the state laws or not. It means if you are not following the laws, so they people can drag you towards the course. And the resource market may also they develop the condition in which either you fail or you succeed. Okay, what is the resource market? The market which owns the resources, like the labor resources, the raw material resources, and other human resources. And there are the governmental policies which is either hinder or support your facilities. Like you can say that recently government has lifted the ban and lifted are giving certain subsidies to the textile sector in the importing the cotton yarns from other neighboring countries, and they have removed the custom duty and other duties. Okay, so it will definitely it is a very big breakthrough, the step, and it will also develop and they positively impact the corporate, sorry, textile sector. And when they have banned these things, and they have increased the custom duty and import of the cotton yarn, so many of the small businesses who were working in this textile sector were closed. Many businesses were closed. So you can see the updates from the Faisalabad industrial area. So they were badly affected. Okay. So different policies of the government have an impact over the way you are working, because you are bound to certain conditions which are imposed by the legal environment or the political environment. Okay. सो ये चीज़ें हो गई सारी। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नई नहीं है, मेरा ख्याल है। कोई है क्वेश्चन तो पूछ लें यहाँ पे। सर इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है, जिस तरह अभी जो ओवरऑल वर्ल्ड में कोविड की पोजीशन आई है, तो उससे कई बिजनेसेस को ग्रोथ भी मिली है और कई जो है वो अपना लॉस में भी गए हैं। तो इसमें ये जो आपने सारी एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर, जो भी सारे फैक्टर्स बताए, इसमें उस सिचुएशन को हम क्या एज अ किस नेम से जो है वो करेंगे आइडेंटिफाई, इस तरह की अगर कोई सिचुएशन सिचुएशन होती है, these are like a triggering events, ठीक है? और these triggering events are मतलब sometime open up opportunities for you for creating new ideas, new businesses, new business opportunities, ठीक है? Entrepreneurial ventures, and sometime they are providing the threats, ठीक है? तो देखें, एक कंडीशन ऐसी, एक कंडीशन जो है, तो वो आप किसी भी एक कंडीशन को नेम नहीं दे सकते, ठीक है? कंडीशन को नेम देंगे टारगेट के हिसाब से, द वे द टारगेट इज द इम्पैक्टेड है,
अगर it is negatively impacted, so that means that condition is a threat to that target, okay, or that business. It is if it is a positively impacted, it means that same condition may be an opportunity for other. तो एक के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है और एक के लिए वो क्या होती है, थ्रेट होती है। तो आप कहाँ से बैठ के देख रहे हैं, ये इसके ऊपर इम्पोर्टेंट है। जिसने आपने खुद बताया कि कुछ बिजनेसेस जो है उनके लिए फायदा हुआ, कुछ के लिए नुकसान हुआ। जिनके लिए फायदा हुआ उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी थी और जिनके लिए नुकसान हुआ उनके लिए ये थ्रेट था। ठीक है, तो ये एक ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं और ये समटाइम जो है रिकरिंग होते हैं, समटाइम ये वन टाइम के लिए आते हैं और समटाइम ये मतलब है कि मुसलसल हो जाते हैं इस तरह के इश्यूज। तो ये क्योंकि हम लोग ना यहाँ पर जब भी ये देखें आपने जो यहाँ हमने ना थियोरेटिकली स्टडी किया, तो ये बड़ा हमने स्टेजेस में और बड़ा हमने स्टेप वाइज और बड़ा लीनियर एक मॉडल आपके सामने खुला हुआ आप देख रहे हैं कि ये स्टेजेस हैं। So do you think that every business move in a very single and same sequence? No. ठीक है, sometime मतलब you not move in a very linear position. This process is a non-linear, हाँ, ups and downs हैं और forth and back movement है। ठीक है, ये बहुत सी condition है just because of environmental dynamism. Environment जो है वो इतना dynamic है कि ever changing conditions you have to face, हाँ। So that's why you know कि आपको जो है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और वही समटाइम प्रॉब्लम्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन जाते हैं कि जब आप उनको पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें जब आपका एक बिजनेस आपने शुरू किया, हमने यहाँ पे एक बात की थी कॉम्पिटिटर्स की। ठीक है, आपके पास क्या होता है जब भी आप यहाँ स्मॉल बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अभी देखें आपको पता है कि फाइजर ने जो है वो बना दी, क्या नाम है, वैक्सीन बना दी। अब फाइजर ने वैक्सीन बना दी, सो डू यू थिंक दैट दे हैव वेरी मच कॉम्पिटिटर्स? कि अगर फाइजर ने बना दिया तो कल जो है कोई और कंपनी का मैं भी बना लेती हूँ, वही बिजनेस मतलब वही वैक्सीन वो बना सकती है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम फॉर अदर्स जस्ट बिकॉज कि उनका जो फार्मूला है जब उन्होंने बना दी, तो एक तो ये बड़ा कॉस्टली है कि ये जो प्रोसेस है, इनोवेशन प्रोसेस बड़ा कॉस्टली होता है, जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए या हर बिजनेस के लिए इतना अहम नहीं होता। फिर उनको पास लीगल कवर होता है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं तो इनको पेटेंट्स इशू हो जाते हैं। जब उनके पास एक चीज़ पेटेंट आ गई तो फिर ये इनकी प्रोडक्शन ये लोग ही कर सकते हैं या वो लोग करेंगे जिनको ये लाइसेंस इशू करें। बात समझ आ रही है ना? यहाँ जो स्मॉल बिजनेस की जो इनोवेशंस होती हैं वो एक तो इतनी रेडिकल इनोवेशंस नहीं होती। ठीक है, इनोवेशन दो किस्म की होती है ना, रेडिकल इनोवेशन होती है जो मतलब कंप्लीटली न्यू चीज। अब फाइजर की जो वैक्सीन है इट इज अ रेडिकल इनोवेशन, इट इज अ ब्रेक थ्रू इनोवेशन। ये लोग इनकी जो है इनोवेशन बहुत ज्यादा मतलब रेडिकल नहीं होती ना, तो उसमें कोई भी बंदा इसमें आ सकता है क्योंकि कास्ट फैक्टर जो है वो हमने बैरियर्स टू एंट्री पढ़े थे ना 5 फोर्सेस मॉडल में पोर्टर का। ठीक है, बैरियर्स टू एंट्री जो है वो कौन से हैं? अब जहाँ पे यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री बड़े कम होते हैं, इस वजह से कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं और आपके वो सब्सटीट्यूट लेके आते हैं। तो फिर क्या होता है, वो आपकी ही मार्केट शेयर को वो जो है वो मतलब है कि खा रहे होते हैं, दे आर यूजिंग योर मार्केट शेयर। तो फिर आपके पास क्या इशू बन जाता है, या तो आप छोड़ दें उस बिजनेस को या फिर आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं। तो मकसद ये है कि जब तक आप उसमें से बिजनेस आपने अपॉर्चुनिटी ले ली, फिर जब नई कंडीशंस आ गई हैं तो वो बिजनेसेस जो हैं उनके लिए डू और डाई की कंडीशन हो जाती है कि या तो आपने जो है खत्म हो जाना है या आपने डाइवर्सिफाई करके तो आगे चले जाना है, या आपने जो कंपटीशन के जो मयार हैं वो बदल देने। तो ये सारी चीजें आपके पास चलती रहती है, आप बिजनेस के अंदर वो सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो ये है डिफरेंट कंडीशन। आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि डायनामिज्म का, और यहाँ इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हुई है। ठीक है, इस दौर में बहुत से नई जो है वो रिसर्च सामने आई है, बहुत से नए आइडियाज सामने आए हैं, और ये क्योंकि है ही इसको कहते हैं ना क्या नाम है, न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, या न्यू नॉर्म्स या न्यू नॉर्मल का नाम इसको दे दिया जाता है कि इसके अंदर मैं तो एक थोड़ी सी, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक होता है कि लेआउट, बिजनेस लेआउट का एक चैप्टर होगा, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि लेआउट किस तरह आप करते हैं और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द लेआउट। आप देख रहे थे किसी दौर में ना जो थे मतलब है कि क्योंकि अभी यहाँ पे आजकल जो है स्टेट के जो स्पेसेस हैं बहुत कीमती हो गए ना, ऑफिस स्पेसेस या जो है वो बहुत ज्यादा उनकी कास्ट बढ़ गई है। तो उसके बाद क्या हो गया, बड़ी बड़ी ऑफिस का दौर खत्म हो रहा है
और छोटे छोटे कैबिन की तरफ लोग शिफ्ट हो गए। सही है ना? सही कह रहा हूँ? आवाज आ रही है ऐसे मेरी? सही है सर, बिल्कुल ठीक सही है। है, बिल्कुल काफी सही। चीजें अब जो है काफी हमारे चीजें लोगों ने अडॉप्ट की। हाँ, हमारे बिजनेसेस जो हैं वो छोटे छोटे कैबिन्स की तरफ आ गए, जस्ट टू cut the cost of the rent, cut the cost of the owning a business and space, office space और ये वो चीजें। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो सोशल वर्क डिस्टेंस, फ्रॉम होम का भी सर एक कॉन्सेप्ट भी जो है क्रिएट हो गया कि हम जो टाइम जो है वो दे सकते थे, वहां से भी काफी हद तक जो है हम लोग काफी चीजें कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम ये एक न्यू इनोवेशन हो गई ना। अब ये देखें हमने अब हमारे जो थे बायोमेट्रिक सिस्टम जब से आया तो उन्होंने बंदों को पाबंद कर दिया मशीन की तरह। 8 बजे कर 20 मिनट के बाद आपका बायोमेट्रिक काम करना बंद कर देगा। बंदा दौड़ 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 8 बजे आता है। 8 बजे के बाद हो सकता है बैठा रहे, आखिर में काम ना करे। कि आपने बायोमेट्रिक सिस्टम में क्या किया, लोगों को बतौर मशीन डील कर दिया कि आपने जनाब 8:20 से लेकर 5 बजे तक आपने बैठना है। तो आप काम क्या कर रहे हैं आपको बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं बताएगा कि आप उसके बाद जो इधर आ गए हैं उसके बाद चले गए हैं या इधर बैठ गए हैं, क्या आपने काम किया, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, बायोमेट्रिक सिस्टम आपको नहीं बता रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम आपको सिर्फ वो कहते हैं घोड़े को तालाब तक लेके जाता है। सही है। अब जैसे ही आप वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं आपका बायोमेट्रिक सिस्टम तो फेल हो गया। अब आपके पास कंडीशन क्या आ गई है, अब आप जो है वो डिजिटल कंट्रोल्स आ गए कि आपने काम करें। अब ओरिजिनल काम की वैल्यू की बात हो रही है। बात समझ आ रही है? अब जो है वो जो लीडरशिप कंट्रोल, मैनेजर कंट्रोल आके मैनेजर चेक करता था अच्छा बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा, अब तो नहीं कर रहा। ठीक है, बात समझ आ रही है? कि वर्क फ्रॉम होम ने नई मैनेजरल चैलेंजेस डेवलप कर दिए। देखिए हम अपनी फील्ड की बात कर रहे हैं ना, हमारी फील्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए। अच्छा, उसके अलावा मैं वो जो बता रहा था स्पेस के अंदर, ये हालांकि बहुत न्यू एक एरिया है जिसके पर हम थोड़ा सा रिसर्च करना चाहें तो करेंगे कि जी स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अगर आप ऑफिस के अंदर काम करते हैं जी कि 6 फुट का स्पेस तो आपने मेंटेन रखना है, तो 6 फुट का स्पेस है लोगों के पास। वहां पे तो लोगों एक सेपरेटर लगा हुआ है जो है वो भी तख्ते का, और एक तरफ एक बंदा बैठा है, दूसरी तरफ दूसरा बैठा हुआ है। ओपन एक रिलेटिवली ओपन एनवायरनमेंट में बैठ के काम कर रहे हैं लोग। तो आया ये स्पेसिस की जो है मेंटेनेंस होती है नहीं होती है? तो आप देखें कि ये सारी जो है ना एक बाकायदा हमारे इसको ना बाकायदा चेंज करेगा ये पूरे सिस्टम को। ये जो कोविड है या इसने कम से कम हमारे मतलब एक बिल्कुल नए चैलेंजेस हमारे सामने लाके खड़े कर दिए। तो इस तरह की जो इवेंट्स हैं, ये कंडीशंस जो है, ये आप समझिए कि बड़े ट्रिगरिंग इवेंट्स और ट्रिगरिंग कंडीशंस होती हैं जो कि आपके लिए न्यू आइडियाज और न्यू मेथोडोलॉजीज और इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको मदद देते हैं। बस समझ रही है? सही है सर बिल्कुल सर, जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, पहले हमें पता ही नहीं था जूम का कैसे इस्तेमाल करें, ये वो भाई। आजकल तो जूम मतलब की डेली आप कर रहे हैं। देखें, अगर जूम की पॉपुलैरिटी का लेवल देखें, पहले जूम को कोई पूछता ही नहीं था। ठीक है। बिल्कुल सर, अब एग्जैक्टली। जूम जो जी जी, है वो इतना पॉपुलर हुआ है ये ऑनलाइन एजुकेशन और सारी उसके पर, तो आपको अंदाजा नहीं है कि क्या जूम ने बिल्कुल, इनकलाब पैदा कर दिया है। नो डाउट, नो डाउट। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ डेटा है थोड़ा सा आउटडेटेड है ये हमारी पास जो बुक थी वो आपको पता है 2011-12 की पब्लिश्ड है। तो बहरहाल ये है कि आप थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं कि क्या क्या रीजन है कि मोस्ट पीपल गो इनटू बिजनेसेस फॉर। ठीक है। कि सम पीपल वांट टू टेस्ट देयर स्किल्स एंड एबिलिटी, 55% पीपल सेड। ये एक जो है वो रिसर्च स्टडी की फाइंडिंग्स है। ठीक है, ये सोर्स यहाँ पे दिया हुआ है, न्यू बिजनेस इन अमेरिका। ठीक है। तो कूपर एट आल का है बिजनेस। कूपर एक बहुत जबरदस्त ऑथर है, इसकी काफी सारी मैनेजमेंट के साइड की किताबें छपी हुई हैं। ठीक है। कुछ लोग जो चाहते हैं कि दे वांट टू कंट्रोल देयर ओन लाइफ है। हमारा एक दोस्त था, उसने दूसरे से मशवरा किया कि किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर कंट्रोल चाहते हैं, चैलेंज चाहते हैं, और कौन सा आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, या रेस्पेक्ट एंड रिकग्निशन जानना चाहते हैं, या पैसे कमाना चाहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो दी हुई हैं कि जी कितनी उनकी इंपॉर्टेंस है और किस लेवल की चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा रिसर्च को आप इस आर्टिकल को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कुछ ये चीज़ें एजुकेशनल लेवल ऑफ न्यू बिजनेस ओनर्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हैं। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ये भी एक स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ एडवोकेसी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल बिजनेस एम्प्लॉइज एंड ओनर्स। ठीक है। समझने वाली बात क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, और उसमें कितने लोग हैं और उनकी क्या क्या चीज़ें थी,
मतलब कि बैचलर ऑफ वो कितने हैं और ये परसेंटेज के हिसाब से। मगर आप देखेंगे अगर 2005 का जो डेटा है उसके तहत जो 500 CEOs हैं, मतलब 14 फॉर्चून 500 के, उनमें आप देखें कि 50% से ज़्यादा लोग कौन से थे जो कि बैचलर डिग्री ऑनर हैं। रोल ऑफ प्रोफेशनल डिग्री ऑनर, MBAs और PhD डिग्री ऑनर इज वेरी लो है। और considerable amount of high school degree holders are the equivalent, and the associate degree holders are also greater than those PhDs हैं ये वो। इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कहेंगे कि अगर आप you want to be a very good entrepreneur, so you need a PhD degree or a very the good professional degree. Okay, so it just need a mind, it just need a person with a commitment, person with a particular personal skills, having the capacity to take risk, so to manage the risk। अभी भी आप देखें कि जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं वो PhD होल्डर नहीं है, ठीक है। आप देखें किसी भी सेक्टर में देखें, मैं मिला था ये जो यहाँ मंशा ग्रुप के लोग हैं, क्या नाम है इसके, बहुत बड़ी इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल बिजनेस है और काफ़ी है। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई इस्लामाबाद में, तो मतलब आया था कि ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा BA था, ठीक है, और उसको कोई इतनी ज़्यादा अंग्रेजी भी नहीं आती थी, ठीक है, मगर ही वॉज अ पर्सन विद ग्रेटर विजन, और उसने जो है वो आप समझें कि कितने लोगों को जॉब दिए, और उसके पास कम से कम 32,000 वो कह रहा था मेरे पास मुलाजिम है, ठीक है, मुख्तलिफ अपने फैक्ट्रीज में। तो कहने की बात ये है कि एजुकेशन का एक रोल ज़रूर होता है, मगर एजुकेशन से अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिनका ज़्यादा रोल इसमें होता है आपके बिजनेस मैनेजमेंट में, ओनरशिप में। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे थोड़ा सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 3 जो है फॉर्म्स होते हैं जिसके तहत बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट होती है। एक आध स्लाइड यहाँ से हमारी थोड़ी सी मेरे ख्याल डिलीट हो गई कहीं मुझसे, तो इसमें आप नोट कर लें कहीं। एक होती है सोल प्रॉपर्टरशिप, अपने पास नोट कर लें। सोल प्रॉपर्टरशिप सर ये पढ़ा है आपने? कहाँ पढ़ा है सर? पढ़ा है किसमें पढ़ा है सर? मैनेजमेंट में भी पढ़ा हुआ है सर, और उसमें एफए में सर भी सोए पढ़ा वाला था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अच्छा अकाउंटिंग में भी पढ़ा था। बिल्कुल, चलें जी। तो ये तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा, ठीक है। सोल प्रॉपर्टरशिप, पार्टनरशिप और ये जो है, तो ये कुछ डेटा है इससे रिलेटेड, आप देख लीजिएगा। और इसके फिर आप एडवांटेज डिसएडवांटेजेस का भी आपको पता होगा। फाइनेंस में ये ज़रूर देखते हैं, ये पढ़ाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये तीनों चीज़ें जी पढ़ाते सर, हैं। फाइनेंस इसमें फिर हम इनको नई चीज़ देखते हैं, और इनके आर्टिकल्स आप जो है वो इनकॉर्पोरेशन भी देख लें, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड फर्म कॉर्पोरेशन की चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है, तो मैं भी चाहता हूँ उसको खत्म ही कर दें। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है तो जी बताएं। सर।